and authorization check, different type of authorization, and preserve key. And this is absolute for view entity. Yeah. And also we have seen the filter one. So this is one thing, and metadata. And also one more thing we have discussed. That, yeah, buffering one actually. Buffering is like this table is buffered or not, like that we have to make the check here. So if table is buffered, fully buffered, partially buffered, and what are the types, and the enhancement category. Like in future, if they want to enhance this views, so this is also one of the annotation. So if you, I have created a new CDS view entity. Here you can see enhancement category. There is a group by. Suppose you want to like you would want to enhance some of the field list. You know what is the field list? This is the field list actually. You want to add some field list and you want to do some, you want to do some aggregation, you want to do some case and if case statement, anything you want. If you want to enhance that, so this will come under group by clause. And also projection list like extension of CDS view annotation. Yeah, operator clause, set a operator clause which contain a set of operator clause. So like that we can enhance this using the projected list. Suppose you want to enhance this view into OData services, metadata for the external framework, SAC. So you can define as a projection list. Then only you can, if this view is in projected list, then only you can enhance it. I will give you some standard CDS code. Suppose controls A, and this is our analytical CDS view. Here, if you can see, enhancement category is not there, right? Enhancement category. So this one is enhanced by, I think so. This. So if you want to, okay. If you want to check this one also composite view. So mostly this is also a CDS view. Okay. And one more thing, like if you right click this one is depreciation analyzer. If you go here, this dependency on dependency tree. Yeah, here you can get all the tables. Suppose
one CDS view, under which CDS view, this is one CDS view, this is another CDS view, and here is some other CDS view. This is another CDS view. So CDS views, inside CDS view, many CDS view they have used. This is the last they have used a table level. So if you will go in this table VBAP, see here the enhancement category is like extensible character memory. So how you get to know? So you can open the GUI from here also. Let me open, and I can show you the ECC one, like SE11 code base PA. So here displays working like this one. So this don't have personality to open this. Let me log for this. This is Eclipse. So Eclipse will open in the Eclipse view only. Then some table you can check here extra enhancement category. Here you can be enhanced character like anybody. So in this, right, this table, transparent table, can be enhanced with character anybody and can be deep enhanced and character only and cannot be enhanced. Suppose there is something new then happened. Yeah, while doing the enhancement of anything, right? So what we'll do, we will do the enhancement for this standard table in our customer exit and yeah, this is the enhancement they have done, standard enhancement. So this standard enhancement is done by SAP. Yeah, SAP. This one is done by this structure is not C1, right? You can see in attributes, it is created by SAP in Okay, 2021. Okay. 21 they have okay, created the latest one. If you check the baby again, right? It is created on 2025. Okay, this is last change actually. So maybe some other enhancement they have done on the 25. Okay, see okay. here. And this date, let's say they have done this enhancement on July 2025, 19th of July. So they write this date in MMDDYY format, right? I mean, for this, This one, yeah, this seems like MMDDYYY, right? yeah, 19. Okay, so they write 7th of MM 19. Okay, 7th okay, of 9, right? So if you right, right. go see here, this is the custom enhancement they have done, registration detail, right? Okay. So here you can see this enhancement they have done on 2025 in local package, right? So maybe some of latest enhancement they have done for what when they have done this. This is 19/7/2025, right? And this is Right. matching size 19/7/2025. So latest enhancement they have done this ZZ test. test. Okay. Yeah, this latest enhancement. There are many enhancement they have done. So if it is character, then it will character only allowed. Numeric is not allowed. Right here they have done the numeric enhancement, right? For the some numeric
field. So like Okay. that, uh, uh, some tables they have restricted to do the enhancement. This Okay. is In simple language, can I table. say that in this particular table they have added a custom field? That Yeah, is yeah, what we mean custom by field, enhancement, right? custom So field, additional custom columns of registration details, test, append, sorry, Z star, append structure, this append structure wherever demo. you will get These. Z, right? Hmm. That one is created by our like us. Okay. Okay. And if Okay. it is done by SAP, then it will be not start with Z. Noted. And Works that was. one is done by the OS S node. On that day, I have trying to write OSS node, S. right? Yeah. Then Yeah. it is OSS. wrong actually S node. Agree. Agree. So that thing has to be usually done by basis team, right? I mean, we cannot. Yeah, basis team. But in that also two part. There is automatic or automation and there is manual, right? Mhm. Suppose basis want to implement that OSS node, right? So there will be some manual correction. So for manual correction, ABAP will do. Okay. They will come And to us. Please create. Suppose they are going to add this structure in this table using OSS node, right? Suppose this in this OSS node they have SAP mentioned. Please create data element in SAP. So basis team will reach to us. Please create data elements here, right? This one data elements, and they will give us the access key to create this because this is the standard one, right? If mhm. it is one, then we can create, but it is standard one. So I have to create with this naming by using the access key and save in TR, and then I will give this TR to basis team. They will implement in quality stage or production environment by moving this TR and implementation this OSS node. There is a stepwise actually. You Right. have ever implemented OSS node? No, but in one of so I recommended one of my client to implement two SAP nodes. So that time, so actually I'm from functional background, so I do not have access to implement the OSS node. But sometimes it happens that they ask us that, okay, you tell me which node to implement. So we have to explain them that, okay, this is the node number. These are the steps to install or implement. Then we give them the blog that, okay, you follow these steps. After following Yes, these yes, steps, yes. it will be implemented. Okay, okay. And then you have some background. So in background, then if not, then I have to explain from scratch for OSS. Then only you can understand. You can understand. And no, no, that is fine. We can move ahead. No worries. So yeah. So this is the enhancement category mentioned here. So in CDS, how they are mentioning the enhancement category, it is not a mandatory one. Yeah, but for table, you have to define. But CDS view, it is not mandatory. Where I was, yeah, this one. Yeah, here in table VPAP. So here they have mentioned enhancement category. In CDS view, this is not mandatory, but yeah, you can use. So this dependency table, let's say I have clicked on row number 31, which is define view T sales document item. And after right clicking over there, I am going to the dependency table, right? So this option of dependency table, this is available for any view, right? I mean the define, whenever we use the annotation define view, there it is available, right? It is like that. Yeah, I will explain you. C underscore from sales, right? Mm-hmm. See, there are many CDS view, correct? So Right. now
we are working on entity, CDS view entity, correct? This is the entity. This is access control authorization part, and this is Mm-hmm. extensible CDS contest. They have extended this CDS view, something like that. And there are many gateway services, OData service they have created. This is also OData services for this one CDS view. So basic is CDS entity. So I'm going to basis CDS entity. Okay, Okay. there it is. Yeah, this one. This is the this is the 1 minute. Uh, entity CDS view. See here, you can see one thing. Here, this is not entity. This is means CDS view, and this is older one. This is not new one. Correct. Mm-hmm. So, so what they have created. So for this is older means I have explained you this one view entity or normal CDS view and CDS view entity. So this one is older one. So Okay. yeah, older one because there is no entity mentioned. So here you can see the SQL V name. SQL V name we start with this. Okay. So you can open this view in SE11 also. See here. This is your view name, SQL view name, and this is your uh, CDS view. Correct? How? Okay. So this one is one example. And here this view is parameters. That one I will explain actually how we are creating parameters. And you are asking about this is the sub view. Once this interface view is consumed by this consumption view. And now if you right click, suppose you will click right main consumption view, right? Main consumption view. Okay, make that right click here. And we have to go when deep analyzer that one from first day I'm searching, right? Now I have it how I this is the dependency tree deep analyzer. It Mm-hmm. is opening, but I'm not getting how I opened it. I also don't. From here only you can get it. Because in some places it will come here actually in this icon list, but there should be some settings to make a shortcut. Yeah, here one. Again, I Okay, will open forward. with. Chat. Okay, okay. Uh, So once we go to open with, then the last option is this dependency analyzer. this is very important actually when you go to work, right? Then like you want to see the hierarchy, Mm-hmm. how it is. So this will open like this. So here you can get see all the view name. This is one view. This is second view like that. And also you can get to know like what are the tables they have used. See here and how the joins they have used. This is the item.
You can see here item detail VVAP, VVAK, VVKD, VVTA, left outer join. Then a left outer join, one join. This one also I will explain how it works, one join or many join in coming videos. But I will explain Yes. in detail data. This list. You can see how many views, how many interface view they have done association. There are many actually, right? See here, this is one view. Okay, this item view. Above it, there will be another view. This is item analytics, right? So, okay, this is one analytics tool also. They can use this. It open with here. It will not come or what setting. Okay. So this one is yeah. Now I will objective, objective and outline. Okay. Yeah, this one is a deep analyzer. You can see how many views they have used and how many tables. You can get all details. This is good thing actually, and you can export to CSV file also. What you're telling? Noted, noted. We can move ahead. So actually, I'm thinking where to get more data services. This one also. Yeah, they are getting somewhere. Data services. I will come to that after one by one. So right now, just my point of view for explaining here some annotation, right? Because main part is annotation. If you are clear with the annotation, then you click how it will be good actually. So this is the enhancement category, and this one also I have. This is I have created the new view entities by right clicking like this. So new data definition here. Let's go to yes, sample like this. And here you can get define view entity. This is the annotation. And previous one is this SQL view name, compiler, result. This is mandatory actually compiler in the older view, because if you will not give this, it will take as a false. And for if you are doing inner join with the multiple tables, then each table it will go and filter and then it will do the inner join. So it will reduce the performance. That's why we have to mention to making the to make the view performance good. We have to provide this annotation in define view. But in define entities, it is by default, and also this authorization both place level also, and this one ignore propagate limitations. And there is also one more thing, uh, model. How model will take. Model is like how model will behave, how model will take the data,
and what is the quality of this CDS view, and what will be the size, and what will be the data classes. So now I will go here first for with something. So stepwise I will cover. Yeah, this one. So this one is mixed. Here I have mentioned each and everything. Like you are selecting A, suppose. Here is the size quality. Suppose I will take X, right? See here. A means what? It is not mentioned here. B is what? Like that is quality actually, service quality. B, X, like this. So this is our A means what actually? CDS view entity can be used for high volume transaction or a background transaction. Suppose there is yearly data and analytical lab, something they are collecting high volume of data, then we have to use A. So maximum number of DDIC database table, we can use three data DDIC table we can use. Must not call any function, and there should not be called any function actually. Function like some case statement, something like the if conditions, that one is not there. Must not aggregate large number of table rows for the direct access. So these are the like terms, rule and regulation. If you are maintaining A, then you can do only this thing only. Yeah, this is also one more thing. If the underlying table are buffered, CDS view entities should be buffered too. This is the main feature, the main thing actually. If any table you are using, this is general for all actually. You can see if underlying buffer is actually buffer too. Here also I have mentioned, and here in all type, this is common actually. Means अंकुर जी एक क्वेश्चन है हिंदी में पूछ सकता हूँ हाँ बोलिए बोलिए। ये जो ये 42 रो नंबर से नीचे है ये सारा कमेंट्स है ना मतलब कोड नहीं है ना राइट ये कमेंट है राइट कमेंट है एक्चुअली, यहाँ यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, लिख के मैं समझा रहा हूँ, लिखने में मुझे टाइम लगेगा, राइट? हाँ अब नहीं मैं चलेगा लिखना कोई दिक्कत चाहूंगा नहीं है तो इसलिए मैं पहले से लिखा हुआ था, तो मैं नहीं उसी नहीं का कोई स्नैप दिक्कत ले। नहीं है नहीं नहीं सही है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें तो वो तो तो स्नैप अच्छी बात है टाइम बच जाएगा होता टाइम टाइप करने में टाइम लगता है, तो हाँ हम हाँ क्या कर मतलब रहे हैं, इसी से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। चलेगा कोई दिक्कत नहीं मैं एक बार पढ़ लूँ जरा सा जैसे द सीडीएस व्यू एंटिटी कैन बी यूज फॉर हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन और फॉर बैकग्राउंड ट्रांजैक्शन द मैक्सिमम नंबर ऑफ DDIC database table 3 must not call for must not call any function तो ये कह रहा है कि भाई 3 टेबल से डेटा अपन ने लाना चाहिए उससे ज़्यादा लाएंगे तो हैवी हो जाएगा नहीं, ये कहना चाह रहा है हैवी हो जाएगा, या करेक्ट। अच्छा लेट्स से मैं भाई 3 टेबल जैसे एसी डॉक ए नाम से एक टेबल है वहाँ वो एक टेबल हो गया हाँ दूसरा टेबल हो गया एसी डॉक यू ये जीआर वगैरह में काम आता है तो सपोज मैं ये 2 टेबल से डेटा एक जगह पर लाता हूँ तो वो चल जाएगा वो हैवी नहीं होगा राइट चल जाएगा, मतलब चल जाएगा। ओके और इन दोनों टेबल के ये बीच ऐसा कुछ लेफ्ट आउटर जॉइन वगैरह भी अपन लगा पाएंगे है ना जैसे अभी लगा इसमें तो बहुत ज़्यादा पाएंगे। फील्ड होती है 500 यस फील्ड यस। होगी एक टेबल में करीब करीब मुझे चाहिए 20-25 फील्ड ज़्यादा से ज़्यादा तो अ, वो हम ला पाएंगे है ना मतलब वो देखिए अभी कोड में आपको, अगर हम लिख दें हाँ हाँ, जैसे अभी मान लीजिए आपको 20-25 फील्ड चाहिए, करेक्ट? तो हाँ आप हाँ एक बेसिक सीरियस व्यू क्रिएट कर लीजिए। ओके बेसिक सीरियस व्यू, आपको कम फील्ड चाहिए, तो आपको कम फील्ड चाहिए हाँ तो एक बेसिक सीरियस व्यू क्रिएट करेंगे, और
आपको आप जो आपका एसिडो का यू और एसिडो का दोनों का अलग अलग एक सीडीएस व्यू क्रिएट कर लीजिए, 5 5 बिल का। और वो सीडीएस अच्छा व्यू अच्छा। फिर आपके मेन सीडीएस व्यू कंपोजिट नहीं तो एनालिटिकल सीडीएस उसमें कॉल करिए। तो उससे अच्छा अच्छा आपको क्या ओके। होगा, आपको ए डिफाइन करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप क्या कर लीजिए, आपका रिक्वायरमेंट जैसे मैक्सिमम नंबर ऑफ 15 टेबल्स, जैसे आपका रिक्वायरमेंट है यहाँ देखिए 100 टेबल, तो आप एक्स यूज कर लीजिए। उसमें ज्यादा ओके कुछ कर ओके। सकते हैं आप, उसमें आपको सम कर सकते हैं। अब इसमें रेस्ट्रिक्शन डाल दिया ना कि ये आपको बैकग्राउंड ट्रांजेक्शन के लिए होता है। हम्म। बैकग्राउंड ट्रांजेक्शन मतलब क्या, जो आपको SM35 में जाके हम लोग बैकग्राउंड में ये कोई यूजर रन नहीं करता है। जैसे अच्छा, तो आपका ये कह रहा है कि भाई जब मंथली आपके बिलिंग, मंथली बिलिंग हाँ हाँ, वो तो बहुत ज़्यादा रहेगा। तो मेरे ख्याल से वो ये ज्यादा। कह रहा है कि भाई अगर आपको एकदम रियल टाइम चाहिए और आपका डेटा बहुत ज़्यादा है, जैसे भी एक दिन में अपन 100 इन्वॉइसेस पंच कर रहे हैं, और ये एक एक शॉप के या एक प्रॉफिट सेंटर के ऐसे 10 प्रॉफिट सेंटर है, तो करीब करीब 1000 इन्वॉइसेस रोज के पंच हो रहे हैं, हम्म। है ना। और इस इन्वॉइसेस का समझो मुझे कुछ ट्रांसलेशन करना है, करेंसी चेंज करनी है, जैसे भाई आईएनआर में सारी इन्वॉइसेस है, मुझे इसको यूएसडी में लाना है, और भाई मैं 86 रुपये का रेट लगा रहा हूँ, है ना। तो शायद शायद उसके लिए कह रहा है कि भाई आप 3 टेबल मैक्सिमम लाइए, और उससे करिए। मतलब शायद वो हाई वॉल्यूम के लिए कह रहा है कि भाई वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए आप 3 टेबल से ज़्यादा नहीं ला पाओगे। नीचे में जाके वो कह रहा है कि भाई 5 टेबल, है ना, तो वहाँ पे शायद वॉल्यूम कम होगा। जैसे हाँ, ऊपर में वॉल्यूम कम ए होगा, वाले में इसने डिपेंड। बोला है कि भाई, हाँ ऊपर वाले में इसने कहा है कि भाई हाई वॉल्यूम ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल कीजिए। नीचे में हाई वॉल्यूम नहीं लिखा है। ठीक तो है आप ठीक है। ही डिफाइन कर दीजिए। तो डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या। अब इसमें देखिए आपको कितना सेकंड लग रहा है, ये भी लिख दिया हुआ है। ये बहुत जगह आपको बहुत लोग को मालूम नहीं रहता है कितना मिली सेकंड यूज होता है। 2 सेकंड, मिली सेकंड। ये देखिए 2 से 5 मिली सेकंड होता है, ये भी लिखा हुआ है। हम्म। तो इसमें हम्म। और ये भी लिखा हुआ है इसमें, मस्ट नॉट एक्सेस डीडीआईसी डाटाबेस विथ मिक्स्ड डाटा कैटेगरी। वो मिक्स्ड डाटा कैटेगरी भी नहीं होना चाहिए, उसी के लिए आप यूज कर सकते थे। ये बहुत रेयर केस में यूज होता है। अच्छा अच्छा। ये मिक्स दोनों डेटा चीज बहुत कैटेगरी रेयर मतलब केस। न्यूमेरिक भी हो गया, अल्फा न्यूमेरिक भी हो गया, टेक्स्ट भी हो गया, वो चीज़ मिक्स होगी, राइट। उसे कहेंगे ना मिक्स, या कुछ और है। एक सही जा रहा हूँ। हाँ, एक सेकेंड, मिक्स डाटा कैटेगरी, करेक्ट। ये है आपका मिक्स डाटा क्लास। अच्छा। एनोटेशन। तो हेलो। हाँ सर बताइए, आप कंटिन्यू करें। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। जैसे मिक्स्ड है, कस्टमाइजिंग, मास्टर, मेटा, मिक्स्ड, ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन, इस सब टर्म से तो फैमिलियर होंगे ना शायद। हाँ सर, एनोटेशन हैं ये तो सब। नहीं नहीं, मास्टर डाटा, ट्रांजेक्शनल डाटा, हम्म। जैसे ये टेबल है आपको, हम हाँ हाँ, वो देसी तो लोग करें। हाँ, देसी समझ जाएगा। लोहा यहाँ पे गया। अभी जैसे इधर पे गए, इसमें से ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे ना तो इसमें आप लोग ऑलरेडी काम कर चुके हो शायद, राइट। इसमें डाटा देखिए, डाटा क्लास ये दिखा हुआ है आपको। मास्टर डाटा, ट्रांसफर, ट्रांजिशनल, ऑर्गेनाइजेशनल डाटा, आपको ज्यादा ये फैक्ट टेबल, डब्ल्यू। अब वो शायद जीरो, ये वन होगा, वन वाला होगा ज्यादा डाटा, ट्रांजेक्शनल डाटा। तो इसमें मिक्स लिखा हुआ है ना, सब टाइप का हो सकता है। तो उस केस ये लिखा हुआ है कि मिक्स्ड लग गया, ठीक है। मस्ट नॉट एक्सेस डीबीआईएस टेबल विथ मिक्स्ड डाटा कैटेगरी। तो मिक्स्ड डाटा कैटेगरी नहीं होना चाहिए टेबल का। ओके। ये हमको लग रहा है ना आपको, जैसे लॉग होता है ना, लॉग टेबल, जैसे आपका एपीआई आता है तो लॉग रजिस्टर होता है, राइट। अब लॉग चेक करने के लिए, लॉग को रिट्रिगर करने के लिए, उस केस में ये सब यूज होता होगा बैकग्राउंड जॉब। ये हम लोग भी कभी यूज किए ही नहीं है, कभी रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ा है इसका।
हेलो। बैकग्राउंड जॉब के लिए हम लोग को प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम लिख करके मल्टीपल टेबल से डाटा लेके आते हैं और प्रोग्राम को बैकग्राउंड में शेड्यूल कर देते हैं। तो जरूरत नहीं हमको सीरियस व्यू जाने की। करेक्ट। हाँ सर। सिर्फ इसमें हाँ, ये रहेगा ना सर कि जैसे आप प्रोग्राम बनाते हो तो आपको प्रोग्राम, अच्छा आपने शेड्यूल कर दिया, जैसे भाई रोज सुबह 9 बजे वो प्रोग्राम रन हो गए तो वो वही हो वाला है जाएगा। शेड्यूल। हाँ, हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसी 38 में हम लोग जाते हैं। राइट, हम लोग का एसीसी सिस्टम में हम लोग जो क्रिएट करते हैं, ऐसी 38 में प्रोग्राम क्रिएट किए। वहां पे हम लोग सीडीएस व्यू नहीं तो टेबल्स, वहां तो मल्टीपल टेबल्स भी लेके आ सकते हैं हम लोग और अपने हिसाब से कोड लिख सकते हैं। और वहां अच्छा अच्छा। लोग वो प्रोग्राम को हम लोग बैकग्राउंड जॉब शेड्यूल कर देते हैं। मंथली में आपको मान लीजिए 1 करोड़ भी बिलिंग होगा तो वो कम से कम 10 घंटा भी रन करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ रातों रात कर चलते लेगा वो रहेगा। तो। हाँ, वो चलते रहेगा। नॉन वर्किंग आवर्स में वो चलते रहेगा। तो इसका हम लोग को ज्यादातर जरूरत नहीं पड़ता है। सीडीएस व्यू का क्या है कि रन टाइम में काम करना है, मतलब। राइट, इस तो वो हो जाता है, नीचे वाले क्लास से ही हो जाता है। इसकी हम लोग अब देखना पड़ेगा, मुझे भी कौन सिनेरियो में यूज करता है, मैं कभी चेक भी नहीं किया है। बस जनरल ये की टर्म्स है, वो सब तो सर बताया आप गया। लोग बी और सी वाले इस्तेमाल करते हैं आप लोग, ऐसा ऐसा है? नहीं, रिक्वायरमेंट होता है, जैसे भी मान ज्यादातर तो ओ डाटा सर्विसेज के लिए ही क्रिएट किया गया है। राइट। तो हाँ। हम लोग ज्यादातर एक्स यूज किए हैं, एक्स नहीं तो डी। अच्छा। उससे ज्यादा तो कुछ यूज किए ही नहीं है, एक्स ही मैक्स मोस्टली यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैं इधर पे ये गया, इसको हटा दो, इसको हटा दो। इसमें क्या ये एक्सेल यूज किया हुआ है। हाँ साइज कैटेगरी एक्सएल यूज ये किया है, तो ओके। डाटा मॉडल है, सॉरी, ये डाटा मॉडल का है। अच्छा हाँ, अच्छा। वही है, सेम ही है डाटा मॉडल। एक्सेल यूज किया है, सर्विस क्वालिटी डी यूज किया हुआ है। तो डी ये है, डी ये भी यूज किया 100 है। वाला ही यूज किया हुआ है, ये भी 100 ही यूज करता है। ओके ओके। तो मोस्टली ये भी बहुत अच्छा है। ये बताइए क्या यूज किया है। यहाँ सी यूज किया है, सर्विस क्वालिटी सी। सी यूज किया, ये बहुत ज्यादा रिकॉर्ड लेता है, बहुत ज्यादा रिकॉर्ड अच्छा लेता है ये भी। ये मतलब इंटीग्रेशन है विद एफ आई एम एम एस टी सबसे, ये सीरीज की। अच्छा अच्छा। इसका फ्यूरी एप्स में आप लोग को बताऊंगा। तो इसका हम्म। कहा गया डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट क्या क्या था, सी यूज किया ना ये। हाँ सर। सी 15 टेबल। 15 टेबल, तो 15 टेबल तो यूज किया ही होंगे उसमें। और बाकी ओके। सब्सिडियज भी यूज कर लिया। अभी मान लीजिए इस केस में बी टाइप आप डिफाइन कर रहे हो, ए टाइप, राइट। तो इसमें क्या हम्म। करोगे आप, जैसे मान लीजिए मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टेबल क्या होता है ना, टेबल से डाटा डाटा आप लोग लेते हो, राइट। तो वो आपको डाटाबेस को हिट करता है, उससे परफॉर्मेंस डिक्रीज होता है, राइट। हम्म। तो सीडीएस भी फास्ट रहता है। तो क्या कर लीजिए, अभी मान लीजिए आपको 15 टेबल से लेना है डाटा और आप साइज कैटेगरी ए ले यूज कर रहे हो, पहला वाला। और जिसमें मेंशन किया है कि 5 ही आप ले सकते हो, बना 5 ही टेबल ले सकते हो, राइट। तो नहीं, क्या ए में तो करेंगे। 3 ही मेंशन किया है उसने। हाँ, सब 3 मेंशन, राइट, 3 मेंशन किया है। तो अभी क्या करेंगे, ये तीन तीन ले लेंगे हम लोग यहाँ से। और बाकी क्या करेंगे, सीडीएस सीडीएस व्यू ऐसा ढूंढेंगे जो यूज कर रहा हो कम से कम टेबल, उसका हम लोग एनालिसिस करना पड़ेगा वो, लेकिन रेयर केस होगा। और वो एनालिसिस करके हम लोग को सीरीज व्यू यूज करना रहेगा। ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करके तब हम लोग ये कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली हम्म। मैंने देखा है कि वो ज्यादातर एक्स ही यूज करते हैं, तो वो मेरा स्टार्ट होने वाला है। ठीक है सक्षम, एक इसमें ना जैसे सर बता रहे हैं तो ABCD एक्स, हाँ। ये हम्म। इसका छोटा छोटा टेस्टिंग अपने को कर लेना चाहिए, मतलब
ज्यादातर तो एक्स ही यूज आएगा, हम्म। बट प्रैक्टिस एक बार की है ना, एक एक ठीक है। सर्विस को लेके, जैसे भी ए हम्म वाला है तो ए में हम्म अपन एसी डॉक ए से कुछ दो चार फील्ड लेके आए, एसी डॉक यू से दो चार फील्ड लेके आए, और उस हाँ। पे कुछ हाई वॉल्यूम कोई कैलकुलेशन अगर अप्लाई करके देख सकते हैं तो टेस्टिंग कैसा थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है, है कर ना। लेंगे अपन ये। हम्म। हाँ सर, आगे जा सकते हैं सर। अच्छा ठीक है। अभी जब मेरा पहला क्या था, एक्स था क्या, जब ये किया था, तो इसमें आपको न्यू हो जाते हैं डाटा डेफिनेशन। इसमें ये एक्स है, बाई डिफॉल्ट भी एक्स आता है। ओके, साइज एस, एक्स। साइज तो कैटेगरी एस लेना मतलब ये ऐसा हो गया है कि भी नंबर ऑफ रिकॉर्ड जो आएगी, रोज आएगी, एक्स, उसका कुछ लिमिट रहेगा। एक्स तो वो ऊपर वाला हो गया, नीचे एक उसने साइज कैटेगरी भी कहीं लिखा है। हाँ, साइज जैसे ये कैटेगरी। सर्विस क्वालिटी और साइज दो अलग चीज लिखी है। हाँ हाँ हाँ। तो अभी एक्स है, बाई डिफॉल्ट भी वो एक्स आता है। ठीक है, साइज कैटेगरी। तो मेरे ख्याल से ये ऐसा साइज, कुछ होगा कि भी नंबर ऑफ रोज 10 लाख 20 लाख ऐसा कुछ होगा। हाँ वैसे ही। देखिए, लार्ज है, एल मतलब लार्ज है, एम मतलब मीडियम है, एस मतलब शॉर्ट है, एक्सएल मतलब बड़ा, ज्यादा बड़ा है, वैसे ही है। तो ये ऐसे ही अच्छा रहता अच्छा। है। अभी इसमें मैं मीडियम ले लेता हूँ, तो चलेगा। तो अभी मैं इसका डॉक्यूमेंट बनाया था क्या, इसमें रेंज मेंशन किया था मेरे पास, पैस नहीं लिया हूँ मैं। ठीक है, नहीं लिया, छोड़ दिया, तो नहीं लिया तो इसमें मैं टेबल लेवल में दिखा सकता हूँ। साइज कैटेगरी, यही है आपका साइज कैटेगरी। ओके। ऐसे ही रहता है, इसमें बता सकता हूँ। अब उसमें हमको मैच दोनों सेम है कि नहीं, वो देखना पड़ेगा मुझे, पता नहीं, उतना कोई देखता भी नहीं, याद भी नहीं रहता है। ठीक है, so this is our size category. So how it will work actually? So suppose I am selecting four, right? Four is these two these, right? So like I will select like 5,000, 5,000 to 20,000. So how it works? So when record is like 5,000, right? So it will give the memory allocation in 5,000, 5,000 to 20,000. There is memory, right? Memory like CPU will give memory allocation to this table. So table one. So how much table space will uh, given to this table? So this one, this decision is taken from this class actually. Class of like cat, uh, category, category, size category. So this size category, by defining the size category, table the system understand table having this much record, it will store, so it will give the memory address. Suppose record increased 5,000 per. So again, memory will allocate this much space to this table. So like that it will work. If you are giving high volume of memory allocation, then it will consume. Suppose you are giving one record also in this
if you are defining age, right? And one report you are inserting, so it will the space will be given to this much. That's why if you are like, suppose one day it is coming 10, 20 reports, so you have to give 0 like that. It based on the requirement, based on the data, you have to select what will be precise. So like that it will work. And mixed already explained like what are the type of data, like transactional or organizational system data, all this. Yes, so coming to now, this one is done. This one we need to have to check, like just to make to remember all these things. That's all. You are not remembering also, it is also good. So basically we are working on X as mixed only. Now, so in the CDS view entity, we will extract the data from CDS view entity, database table, and table functions we can do, and CDS hierarchy, and CDS DDIC based view. This is also we can use. This is all the data sources. And will come with the entity only. This is called literals. Literals. So there is one concept called literals in CDS. So it will support the literals. Yeah. Suppose that the inner join VA and then R. And there is one in SAP in GUI, right? Is we are doing inner join by using tilde symbols, but here we are using dot symbols like this. E dot. And now you can take over P dot dot and dot here dot and R. So now control F3 to activate it. Activate it. Okay. If you are doing inner join, then you have to on condition on in dot then dot then so that as customer what is here. Okay, sorry, EPA as item
let's enter that. So okay, postmark, sorry. So it's postmark. Okay, wait. F, F8. So what? So this is the output, sales order, customer, item, material, and this is system. Again. Yeah, yeah. So this is our how you will consume this CDS bill in our SC38. S38. Set that. Yes. Sorry. Sorry. Let's go to the work. Someone is muted also. Okay. On. Yes. Coming to the other side. Yeah. So Control S. Select star. Now right click here. Here you can't use select star. Okay.
suppose I will select star, then I will get the error. Select star cannot be used in the pivot. Okay, this is but in CDS view, like not in the view only, it can be used, but in annotation buffer annotation should not be there. I have written all that anywhere. Not written, right? Yeah. So I have to show buffer system, how buffer system works. But again, if I will activate this, then it will make problem. I have to create separate one. That's not very good. So select star from this view entity. Select star from the item. If I exclude RC equal to 0 and it now can use this display, right? What is the display? How to display? There is a class and method CL demo output CL underscore demo. Now display display or right display. So display and item. So yeah. So now if I will activate this, now what I have done, what is it? Okay, select star from table piece. Now if I go here, let me open it. Again. Okay, into table. Yeah, now okay. So here, this is the program, as a particular program. Where is data preview? So right, F9 control, F8
So see, this is the output of in SE38 how we can how we used this CDS view in our SE38 program. So like this, we can use the our views CDS view in our SE38 program. This one, like how you consume it. I am not charger or what. So now I will get, okay, there is alias, how to, literals I'm saying, right? How to use the literals. So literals like something you can give 0.5 hard-coded constant value. Uh, so this is called literals, like as you can give any name, numeric values, or can give some CDS hard-coded value also you can display as character. Yes, that's yeah. When it is used like in sometimes you got the requirement like based on the condition I want to display the hard-coded text in the report. So in this scenario, we use this. Okay. So like this. Yeah. And one more thing I have forgot to explain actually. I thought I will I have explained, but I don't know. If any table is buffered, then CDS views should be buffer. If suppose you are using 10 CDS view, right? In 10 CDS view, one table is buffered, right? Buffered means if we will go in S level, this is the buffer not allowed, buffer activate. If any table is buffered, then you have to use buffered for entire CDS view. This one is main thing actually. If you are not giving any buffer thing, then it will show the error. Okay. Okay. And in CDS view, okay, one more thing. I will not write because I will write then and then it will take time. Okay, for parameter, right? For the parameter, I will explain how this parameter CDS view. Before that, I will take alias name. Suppose I'm giving alias name for this. सर अभी आपने न्यूमेरिकल और कैरेक्टर जो दिया है वो कैसे शो होगा? अच्छा, कैसे शो होगा वो नहीं दिखा ना? इसको राइट और सर ये क्लिक करिए। कंजप्शन व्यू जो आपने बनाया ये बनाना जरूरी होता है या फिर हम ऐसी 1600 देख सकते हैं इसको? इसको नहीं नहीं ये नहीं, ये जैसे मैं बोल रहा हूँ हाउ टू यूज सीरियस व्यू का पर्पस क्या है आपको। ओके ऐसी ओके 38 में यूज कर सकते हो या तो ओ हाँ डाटा हाँ सर्विसेज में यूज कर सकते हो। तो पहले बेसिक आप एसी 30 में कैसे यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने हम्म। यहाँ पे प्रोग्राम बोला डेवलपर को प्रोग्राम लिखो। क्या प्रोग्राम हाँ लिखना है कि हम्म एक हमको कुछ भी रिपोर्ट क्रिएट करना है, राइट? हम्म वेंडर पेमेंट रिपोर्ट सपोर्ट, राइट? हम्म So vendor
वेंडर पेमेंट में मतलब समझ लीजिए परचेज का, परचेज परचेज एंड GR एंड GI तो इनवॉइस, ये सबका एक कॉमन रिपोर्ट चाहिए आपको, राइट। तो इसमें आपको हाँ। कम से कम टेबल्स आप यूज करेंगे, कम से कम 50 टेबल्स से नीचे यूज नहीं करेंगे, और ये आपको कम से कम 50 टेबल्स यूज करेंगे, तब आपको जाके ये रिपोर्ट जनरेट होगा। और इसको टाइम लग जाएगा आपको ये करने में कम से कम 15 डेज लग सकता है, राइट। और इसका एफ एस क्रिएट करने में बहुत समय लग जाएगा। तो अभी मान लीजिए 50 टेबल्स आप यूज कर रहे हो, तो उसका एक सीडीएस व्यू होगा, कॉमन सीडीएस व्यू, परचेज का एक सीडीएस व्यू होगा, GR का एक सीडीएस व्यू होगा, GI का सीडीएस व्यू होगा। अब मान लीजिए सीडीएस व्यू आपको मैंने मान लीजिए 7 सीडीएस व्यू मिला, राइट। अब सीडीएस व्यू में, एक सीडीएस व्यू में आपको कम से कम सपोज मान लीजिए आपको एक सीडीएस व्यू में ऐसे लिखते हैं, 1 सीडीएस व्यू में आपको हम्म 200 फील्ड्स है, राइट। हम्म अब 7 सीडीएस व्यू में कितने फील्ड्स होंगे, बहुत ज्यादा फील्ड्स होंगे, राइट। हम्म तो आपको पहले आउटपुट चाहिए आपको कम से कम मान लीजिए 20 फील्ड का ओनली, लेकिन हम्म लॉजिक बहुत बड़ा है। तो आप क्या करोगे, 7 सीडीएस व्यू का आप एक कॉमन बेसिक सीडीएस व्यू क्रिएट करोगे। बेसिक सीडीएस व्यू क्या, बेसिक सीडीएस व्यू कस्टम सीडीएस व्यू, राइट, कस्टम। और आपको मालूम ही है कि सीडीएस व्यू में हमको बस फील्ड लेना होता है, सेलेक्ट स्टार लेना नहीं होता है। तो हम्म। आप क्या करोगे, व्यूज से आप ओनली वही फील्ड सेलेक्ट करोगे, सात ओके, सीडीएस समझ व्यू गया। से। हाँ हाँ। तो आपको बस वही फील्ड सेलेक्ट करना है जो आपको चाहिए, करेक्ट। तो आपने हम्म बेसिक कस्टम सीडीएस व्यू बनाया, चाहे आप एक बना सकते हो, चाहे आप दो बना सकते हो, या फिर तीन बना सकते हो। मतलब कि अब हम वही स्टैंडर्ड सीट, सीडीएस, मतलब कि हाँ, जैसे कोई स्टैंडर्ड सीडीएस व्यू है और हमें उसमें से कुछ ही फील्ड चाहिए, मतलब 2-3 फील्ड ही चाहिए, तो हम उसका हम्म, एक कस्टम सीडीएस व्यू बना लें। बना लेंगे, करेक्ट। और बाकी जो अलग अलग सीडीएस हैं जो स्टैंडर्ड, जो और जिन जिन से जो भी फील्ड चाहिए उनको ज्वाइन करके अपन एक ही व्यू में कर दें। कर देंगे, करेक्ट। ओके। तब वो आपको एक बेसिक बेसिक कस्टम सीडीएस व्यू क्रिएट। अब उसको आप ऐसा डिजाइन किए हैं कि वो आप ये रिपोर्ट छोड़िए, आपको ऐसा n नंबर ऑफ रिपोर्ट आप यूज कर सकते हैं। तो आपका हम्म जो 15 दिन 30 दिन लग रहा था वो घट के आपका 2 दिन हो जाएगा, हम्म। करेक्ट। हाँ। ये है। अभी जैसे एक सिंपल सा बताएं हम, अभी हमारा परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट का हम लोग केओ से जाते, सेल्स मान लीजिए सेल्स में काम कर रहे हैं तो सेल्स का पीबीएटी, ओके, पीबीएके, राइट। ये टेबल में जाके हम लोग क्या करेंगे, कोड लिखेंगे और उसको लूप मारेंगे, लूप मार के ये करके वो करके डिस्प्ले करेंगे, करेक्ट। हमारा क्या है, हाँ। व्यू स्टैंडर्ड व्यू ऑलरेडी तैयार है, करेक्ट। तो अब हम हम्म उसको यूज कर सकते हैं। और अभी मान लीजिए हमको कस्टम व्यू व्यू क्रिएट करने की जरूरत नहीं है इनकेस, क्योंकि हम एक ही व्यू क्रिएट क्रिएट कर रहे हैं। एक व्यू से हम यहाँ पे सेलेक्टेड फील्ड भी ले सकते आ सकते हैं। जैसे अभी मान लीजिए इस केस में हम क्या किए, एल लेके आए और AUNNR लेके आए। मान लीजिए आपने व्यू क्रिएट किया कस्टम व्यू, इसमें आपको 1000 रिकॉर्ड है कस्टम व्यू में। अब आपको 10 रिपोर्ट चाहिए, 10 में आपको किसी में 10 चाहिए, किसी में 5 चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे भी LN गुना, राइट। हाँ, सो एरर दे रहा है। अच्छा, ऊपर हम बहुत कुछ लिखे हैं ना इसलिए एरर दे रहा है। LN गुना, फील्ड हैं तो टेबल की टेक्निकल नेम। सॉरी,
एक मिनट देख क्या एरर है। अरे यार, सेलेक्ट लिस्ट मस्ट सेपरेटेड बाय कॉमर्स, कॉमर्स तो डाला था भाई। एरर, एरर फ्रॉम सीडीएस ब्लू। इसको पहले एक्टिवेट करके चाहिए, एक्टिवेट हो। इसको एक्टिवेट करते हैं। और फॉलो। अच्छा, एक सेकेंड, क्या करते हुए थोड़ा ऐसो वैसे। ठीक है। हाँ सर। ये एलियास नेम देते हैं हम। हम्म। तो क्या होता है कि इसमें आप मान लीजिए 10 रिपोर्ट में आपको मान लीजिए परचेज, जीआर, जीआई सब जगह आपको मान लीजिए यहाँ पे आपने 100, कम से कम मान लीजिए आपने 200 फील्ड का आपने एक कॉमन सीडीएस बेसिक व्यू बनाए, राइट, सीडीएस व्यू। अब हर रिपोर्ट में आपको किसी में 10 जरूरत है, किसी में 5 जरूरत है, उस हिसाब से आप यहाँ सेलेक्ट करके डाल ले सकते हो। और बार बार आपको लॉजिक क्या पड़ेगा पड़ेगा। इसका हम आउटपुट चाहिए था आपको। और ये डाटा भी यही होता है, ओपन विद डाटा व्यू, उसे भी डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं। यहाँ पे ये ऐसे आएगा व्यू। क्या आया, न्यूमेरिक, न्यूमेरिक होता है, डेसिमल में होता है, 13 डिजिट के आते हैं बाय डिफॉल्ट। और कैरेक्टर तो आपको जितना दोगे उतना है। सो इसको रन करते हैं अभी। इसको रन करने के लिए आपको, इसको होता है डायरेक्ट, नहीं होता है, यूआई बेस्ड होता है, राइट। इसको हम लोग कंट्रोल फंक्शन F8 से रन करेंगे। हाँ क्या हो रहा है, रन क्यों हो रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। इसको रन करते हैं ओपन विथ। इसको एक्टिवेट किया, ये आया, पॉपअप है इसलिए नहीं आ रहा है। दो आया फिर, करेक्ट। हेलो, हमने दो फील्ड सेलेक्ट किया था ना आपको इधर पे, करेक्ट। हाँ हाँ, दो ही किया था सर आपने इस वाले में। हाँ, दो ही किया इसलिए दो आया, करेक्ट। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टार मारेंगे तो सब आ जाएगा। इसको ऐसे रन किया। अच्छा, ये आया, सब आ गया अभी, करेक्ट। सॉरी, अभी मैं क्या करता हूँ, पेयर कर सकता हूँ, बस फोटो कैसे स्टार्ट। इसमें आप देखोगे स्टार्ट हेयर, ए एल एन इक्वल टू, ये डाल दो। ओके, सो इसको भी जाकर करेंगे। मैं सोचा तो चल फिर भी करें, लेकिन पता नहीं होगा। देखिए एक रिकॉर्ड आया फिल्टर में, टाइम लग ही जाता है इसमें।
एक्सट्रा कंप्लीट कर दे पैरामीटर वाला। ठीक है। सो इसमें एलियास नेम भी डाल सकते हैं एज आपको मान लीजिए हेड डाला, राइट, इसका इनर जोन एज आइटम डाल दो, करेक्ट। तो अभी जब एलियास नेम आप डाल देते हो, यहाँ पे सब एलियास नेम यूज कर सकते हैं। इसको आइटम अब ये टैब आपसे लेके आया हुआ है, हेड 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 आइटम आइटम। सो अभी एरर नहीं आ रहा है, इसको कंपेयर डाटा प्रीमियम बराबर चल रहा है। इस आवर सीडीएस में और आते हैं और क्या था टोटल पैरामीटर, राइट। सो अभी हम लोग इस पे अलग ये भी कर सकते हैं, राइट। Here we can go and we can go to here. Why I am talking this, right? Because it will good actually. It's those, right? You can also communicate with this, so better to explore yourself in communication speak. Yes, sir. Yeah. You need to write मातृभाषा है, कैसे भी करनी है. Try to speak. So here we can go with parameter. अगर मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ, इससे बात करो फिर उससे बात करो. So parameter, suppose I'm doing this अरे parameter okay, 1 second. ये पड़ेगा set. So okay, there is right now, okay, there is some option is coming to create parameter, but no issue. We can convert this into as a parameter. So with parameter we can syntax here. It parameters e underscore VLN. What is the type? VLN type. So now if we will execute this, सर हम so नीचे से VBLN की वैल्यू भी हटा देंगे ना. sorry. हाँ सर, ये आपने एक वैल्यू दे रखी है ना, head डॉट VBLN इज इक्वल टू. इसको हटा के उसको डालना है. हाँ. एरर. ओके हियर ये है, दिस एरर नहीं देता है, वार्निंग देता है. हाँ, This वार्निंग देता है. parameter is not used, so you can use this parameter here.
Okay, so 1 minute, I have to copy this. So how you can use the parameter? So like this, you can use parameter up to, okay, not up to. Sorry. Okay. This is the output. So like this, you can use it, parameter CDS view. And here also some of, yes, some default value. Now you can see here when I am executing data, this is star symbols. That means it is a mandatory one. It's a mandatory. So yeah, this is the by default value how you can pass P8, right? I can explain here. Parameters. There is one time or second time. Yeah, comma. We can use comma. So that is for but type I will give system name. What is the variable terms above dates? Okay. There is a different syntax for S/4HANA and our dates. हाँ वरना सर हम SY डेट भी यूज कर सकते थे ना। यहाँ पे आपको there you can use like S11 will go there is a system date SY. So you have transformations right. So system updates there SY. Yeah, system date like this. So all these system variables, but in HANA there will be like different above dates. You can also like this data type. So you can give it. Now you can say you are not used. So you can use it to display here. How to display E underscore dates. So like this. So you can see here how it is displayed as a system date. Like alias name if you want. Okay, now you can see here. This one I want to show actually. Add alias, right? This is mandatory for parameter if you are giving and system variables anything, then alias name should be there. This is mandatory one, like system. Okay. Okay. This is mandatory. You have to give alias name for the parameter. Okay. So open data preview. Right. Data preview. Now you can get the star symbol also. So you can give anything here. But line 5. So here what is mentioning? सर वो वाई दूसरे फॉर्मेट में देनी होगी हमें। Say forward. Correct? So you have to keep proper format.
Now, what you will do, just go there. What is the format of this? Okay, let's ईयर run it. मंथ फिर डेट है शायद. Here I put this. Now here, 01/01/. आ रहा है सर ऊपर ही. Right. y MMDD. Okay, so now सर ईयर मंथ फिर डे. year month, right? Internal format, correct? So data preview. So 2025, you want to, yeah, now you can able to see this format is, right. Now I will close this. This is the format. Now you want to keep this system date as a uh, default value. So what you can, there is one notation for this experimental. So here you have the formatted system code, system date, right? So here, right, system date. So up to 5 you can, 1, 2, 3, 4, 5, right? 5 you can give up to 5. So up to 5. After that you सो ये can't जो give. स्टैंडर्ड जो भी डेट टाइम होगा वो फेच कर लेगा अपने आप इससे. हाँ, सो ओके. ये अपना स्टैंडर्ड पिकअप कर लेगा. अभी देखिए जैसे इसमें गया, इस टाइम लगता है एक्टिवेशन में. ओके, एक्टिवेट हो गया डाटा प्रिव्यू. अभी देखिए स्टार सिंबल नहीं है, करेक्ट? आ गया ऑटोमेटिक सिस्टम डेट. सो आप इसमें आप अप टू 5 ऐड कर सकते हैं. 5 सिस्टम डेट्स, 5 से ज्यादा ऐड नहीं कर सकते. ओके, this is one of the thing. And now हो गया, और कुछ था क्या? ओके, ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है पैरामीटर CDS view. Yeah, 5 to 6 environmental we can use in our parameter CDS view. लिखा हुआ है. ओके. Okay, so default value can be assigned with the annotation A. If our parameter are optional only, when default value is assigned, we can use system fields such as system date. Possible values are, okay, क्या था? 7 underscore CDS underscore system underscore fields underscore B. Okay, no program. Suppose I will open S24. Exist. Okay, it's it's so it should be there, right?
हाँ सर। Okay, SC 38. Okay. Program. This is not class. This is program actually. But और सर क्लास के लिए कौन सा टी कोड यूज किया था आपने? sorry. आपने भी क्लास वाला जो खोला था उसके लिए कौन सा टी कोड यूज किया था? SC 24. ओके SC 24. ओके। क्लास के लिए होता है SC 24. ठीक है. प्रोग्राम के लिए SC 38. So now, so it is not there. 1 minute. I would like this. Start. Yeah, it is there. Okay, ये स्टैंडर्ड हमारा है कोड है क्या? हाँ So demo system fields. Okay, so yeah, this is the class. Okay, so class SC 24. जाएंगे SC 24, राइट? तो यहाँ पे डाला, यहाँ से भी जा सकते हो आप. ठीक है। इधर से राइट कीजिए, ओपन न्यू अदर ऑब्जेक्ट, राइट? यहाँ से आप क्लास, अब आप क्लास नेक्स्ट सर्च कीजिए, अब यहाँ पे डालें. तो लेकिन न्यू क्रिएट करने वाला है, अच्छा ये क्रिएट करने वाला है, निकालने वाला निकाल जाता है. सो ओपन ड्राइव. सो ऐसे जाते हैं. अब हम यहाँ से करेंगे शॉर्टकट लगा, यहाँ पे देखिए हमारा CDS व्यू, करेक्ट? ये देखिए, here what it is doing, it is created a class definition part and it is inheriting from this class and method, and there is a implementation for this class, and what it will do, it will delete the table and it will insert new line, and this is our view and this is also our view. Both view is there. So here date, time, system. So this is our CDS view. Now open this CDS view. Control Shift A. So this is our tool, the data definition, CDS view entity, and this is entity. I will open one. This is our parameter 1, 2, 3, 4, 5 parameters they have used, and this is our parameter CDS view, and here they have used parameter. So here you can see this entity, correct? And this is an CDS view entity. Okay, so this one is demo program. Okay, this one is also one thing, CDS view, correct? Now I will open one more CDS view. So I will put BE. This one is open. It is not open. Control Shift A. Yeah, you went. It's on. See here, there is some difference. How to differentiate? Yeah, you can see this is that defined view. This is defined view entity, correct? And here is SQL is mandatory. Here it is not mandatory. Here is also mentioned. Here 5 views they have mentioned. Here also 5 views. And here you can see in view, CDS view, there is syntax is different. In CDS view entity, syntax is different.
This one only I want. So if you will execute this, my motive to say motive to this just difference only, and this one is latest one. This one is the older one. View open with data preview. Yeah, here directly you can open system variables like this. You could open here also open with data preview. Open here it is also open. Correct. So both have same. Now I will go quickly to show you how it is useful in the real time. Right. So in data analytics query, if you can see this is our parameter CDS group, right? When you run this, by default, it will take this analytical, right? If you open browser, you know, open for it. So it will scroll up. Scroll. Here parameter. Open. So just basically I want to show that default value how they have mentioned. कैसे वो आ रहा है राइट पैरामीटर हाँ सर हाँ वही बस दिखाना है ये एग्जीक्यूट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि ये आपका एनोटेशन की वजह से इसमें कुछ एनालिटिकल क्वेरीज रहेंगे इसलिए वो इसलिए नहीं कर पा रहा है ठीक है ओके चलेगा और इसमें कार्डिनलिटी में स्टार्ट टुमारो करता हूँ ठीक है ओके नाउ मोस्ट ऑफ द थिंग्स आई कवर्ड okay how the class is going on good हाँ सर बढ़िया चल रही है you are getting right हाँ सर समझ आ रहा है एकदम सर एक डाउट था हमारा भी एक अभी हाँ बोले जैसे आज आपको बता रहे थे ना वो डेटा मतलब ज्यादा होता है तो वो लोड लेने में बहुत टाइम लेता है तो उसका मतलब जो भी अपन मुझसे फीड लेकर आके एक नया सीडीएस बना सकते हैं और वो बैकग्राउंड में चल सकता है अपना आज बता रहे थे ना हाँ मतलब हमारा भी जैसे एक स्टैंडर्ड सीडीएस है जैसे आई मैट्रिक्स कंसोलिडेशन रिपोर्ट तो उसको भी जैसे हम उससे डेटा लाते हैं ना तो हमारा भी मतलब बहुत टाइम लेता है वो लोड होने में तो उसका कुछ मतलब कैसे कर सकते हैं मुझे मैं ये पूछना चाह रहा था आप सीडीएस भी यूज कर रहे हो और सीडीएस भी आपको बहुत टाइम ले रहा है राइट हाँ अब उसमें आप पूरा डाटा लोगे तो थोड़ा बहुत टाइम लगेगा ना अभी उसमें कुछ फिल्ट्रेशन यूज करोगे तो परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा और उसको देखना पड़ेगा क्या रिक्वायरमेंट क्या है किस लिए लेना चाह रहे हो आप किस पहला बात तो किस लिए आप पूरा डाटा लेना चाह रहे हो अभी तो आपको टेस्ट सिस्टम अभी मान लीजिए 1 साल 2 साल 3 साल बिजनेस चल रहा है 5 10 साल से तो 10 साल का रिकॉर्ड लेके आप करोगे क्या 3 महीने का रिकॉर्ड जरूरत होता है 1 महीने का रिकॉर्ड जरूरत होता है
नहीं अंकुर जी, प्रॉब्लम यही है कि बिजनेस ऑलरेडी 5-6 साल से चल रहा है। मतलब सेम अप्रोच हम लोगों ने क्या किया है कि एसी डॉक की एक टेबल है, उस पर एक सीडीएस बना हुआ है जो कि स्टैंडर्ड सीडीएस है, एसएपी डिलीवर्ड। उस पर हम लोगों ने एक कस्टम क्वेरी बनाई है और हम उसको एनालिसिस फॉर ऑफिस जो एसएपी का एक्सेल एडीएन है उससे डेटा फेच करने का ट्राई कर रहे हैं। तो यही सेम सॉल्यूशन एक क्लाइंट पर ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, लेकिन उनके एसी डॉक्यूमेंट में लिमिटेड एंट्रीज हैं, तो वहाँ पर वो वर्क कर रहा है। लेकिन वही सेम चीज़ हम दूसरे क्लाइंट में जिसमें एसी डॉक्यू की एंट्रीज जो है वो 115 मिलियन है, एसी डॉक्यू इज क्वाइट बल्कि। तो वहाँ पर वो कभी तो चल रहा है और कभी पूरा क्रैश हो जा रहा है वो एक्सेलेरेटिन। तो इसका क्या अल्टरनेट सॉल्यूशन हो सकता है? वो क्रैश किस लिए हो रहा है? वो दम दे रहा है कि कुछ मतलब वो डाटा? वो एरर दे रहा है कि कैन नॉट एलोकेट इनफ मेमोरी, मेमोरी एरर। अच्छा, मेमोरी इशू है, करेक्ट। यस। हम्म। तो मेमोरी इशू है तो उसका जो डाटाबेस है, राइट, वो कॉन्फ़िगर हाँ। किया है लो मेमोरी के लिए, इसलिए वो नहीं ले पा रहा है। तो इसी एस ओके। फोर हाना ही है, राइट। हाँ, S4 हाना है। एस फोर हाना है। एक क्लाइंट में हो रहा है, दूसरे क्लाइंट में नहीं हो रहा है, मेमोरी इशू है, तो उन लोगों ने मेमोरी कम असाइन किया हुआ है आपको, एप्लीकेशन लेयर में, सर्वर लेयर में कुछ तो होगा कॉन्फ़िगर, और उन लोग वो चेंज नहीं कर सकते हैं। उसका अल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि बैकग्राउंड जॉब में शेड्यूल करें, और ओके बैकग्राउंड जॉब बैक। में शेड्यूल करके उसका जो रिपोर्ट आएगा उसको मेल कर दे, या तो उसको आप SOST है या आपको SP01 स्कूल से ले सकते हैं। ओके, तो ठीक है। बैकग्राउंड जॉब मीन्स कि हमको एक कस्टम टेबल में डेटा लेके आना पड़ेगा पहले उनका। नहीं 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 नहीं, बैकग्राउंड जॉब जैसे ये आपको वो CDS व्यू है, राइट। ओके। हाँ। आप कैसे यूज कर रहे हो CDS व्यू हमको नहीं पता, लेकिन प्रोग्राम में अगर यूज कर रहे हो, राइट, तो प्रोग्राम में जाके ऐसे ही आपका बैकग्राउंड जॉब आता है। 1 सेकेंड, क्या हुआ? इस पर आना में कर रहे हो ना तुम तो। हाँ, हम्म। एस फोर आना ही है ये। हम्म। ये ये है आपका आउटपुट है ना, कोई भी प्रोग्राम मान लीजिए, प्रोग्राम में सर्च कर लेता हूँ, कुछ भी प्रोग्राम होगा ना अपना। चलिए ये प्रोग्राम उठाया, ठीक है। ये प्रोग्राम का आउटपुट तो कुछ आएगा ही नहीं आ रहा है। इसको रन होता है एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड। ओके। जैसे एग्जीक्यूट इन बैकग्राउंड करोगे तो आपको वो बैकग्राउंड में हो जाएगा, वो 15-20 मिनट में आपको आउटपुट दे देगा, राइट। अच्छा। क्रैश नहीं होगा आपको। अब वो जब क्रैश नहीं होगा, अब स्कूल में आप जाओगे उसका ESP01, ये SN35, SN37, राइट, SN37 सरप्राइज नहीं हो, ठीक है। वहां पे जाके आप वो जॉब में चेक कर सकते हैं। अब तभी भी मेमोरी इशू दे रहा है तो बेसिस को आपको कनेक्ट करना पड़ेगा कि इसमें मेमोरी इशू दे रहा है, आप कुछ इंक्रीज कर सकते हो क्या मेमोरी। और तभी भी वो डिनाई कर देते हैं कि नहीं, हम मेमोरी इशू नहीं कर सकते हैं, ये ओवरऑल सिस्टम में इम्पैक्ट आएगा। तब आप क्या कर सकते हो, उसको आप स्प्लिट कर सकते हो। जैसे आप CDS व्यू क्रिएट किए, CDS ओके। व्यू यूज कर रहे हो, एक कस्टम CDS व्यू क्रिएट करोगे आप, उसको डिवाइड कर दोगे, मतलब जैसे प्लान यहाँ पे लिखा है। जैसे आप एक CDS व्यू क्रिएट किए, कस्टम CDS व्यू। अब वो ओके। मान लीजिए आपको 50,000 रिकॉर्ड्स लेके आता है, करेक्ट। तो आप उसको कुछ की फील्ड कुछ भी ये करके स्प्लिट कर दोगे, जैसे मंथ वाइज, ईयर वाइज, और उसको डिवाइड कर लोगे 50,000 को पैकेज में 10,000 करके डिवाइड कर लोगे, 10,000 10,000 10,000, और उसका रिपोर्ट बैकग्राउंड में जॉब करके शेड्यूल करके उसको दे सकते हो, तब मेमोरी इशू भी नहीं आएगा। ओके। ये है, ये एक सोल्यूशन है। क्योंकि क्या होता है ना, एस4 हाना में आपको कभी कभी क्या होता है, जैसे हमारा पास बजट कम रहता है, तो हम मान लीजिए लैपटॉप खरीदे 16 GB का। अब जरूरी नहीं है सब लोग 16 GB का खरीदें, कोई लोग 32 GB का भी रैम रैम खरीद सकते हैं। एस4 हाना में बजट के ऊपर है। अब जो 16 GB का रैम यूज कर रहा है, अब उसके अंदर तो कुछ तो प्रॉब्लम आएंगे भी, या हम्म। तो वो अपग्रेड ओके। करें,
राइट। अब वो बोलेगा नहीं मैं अपग्रेड नहीं कर सकता हूँ, तो आपको फिर अल्टरनेट सोल्यूशन यही रहता है। ओके, तो अंकुर जी वो जो आप बैकग्राउंड जॉब वाला देख रहे थे, आप एक स्टैंडर्ड सीडीएस के लिए चेक करेंगे क्या वो आपके सिस्टम में भी हो गई, क्योंकि वो ऐसे भी डिलीवर्ड ही है कि हम उसके लिए रन कर सकते हैं क्या उसको? मैं आपको एक बार सीडीएस का नेम पिंग करता हूँ चैट पे। हाँ पिन करिए। ये लाइव सिस्टम नहीं है, डेमो सिस्टम, यहाँ सब रन करेगा, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हाँ हाँ। भेज दिए क्या? हाँ, 1 मिनट में भेज रहा हूँ। हाँ, मैंने भेजा है। हेलो। ये हेलो नहीं आया, इधर भेजो। 1 मिनट। या रिकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं, आवर्स